Welcome everyone for today's Twitter Space technique to find breakout trades. And first of all, very thankful to Sunil sir and Chartmojo team to accept this invitation for the Twitter Space. Yeah, uh, yeah. So now we can start. Yes, sir. The stage is all yours. No introduction is required. Straightforward, we will go into the session. So yeah. Thank you so much, Nitesh ji, for inviting us, and it's my pleasure to be there and speaking with all of you. So I and Devraj is there. Okay. So I'll be basically today talking on the concept of breakout trading strategies. So Nitesh ji, I have like I have noted down all the concept for all the people. So you tell me which way should I go? Like you will be asking me questions, or I just start from my सर end. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर एंड दैट विल बी मोर बेटर ना तो आप वो फ्लो पकड़ के आप आराम से नॉलेज शेयर कर सकते हो Correct. Yeah. That will make more sense. यस Correct. Okay. Yeah. So this is so. By the way, see, guys, most of you must be knowing me. My name is Sunil, and we are a team of three people: Abhishek, Devraj, and me myself, Sunil Gurjar. So I am a full-time swing trader, and Devraj is a full-time option buyer. Okay, and Abhishek looks towards the concept of fundamental analysis and so on. Okay, so I guess most of you would be knowing about my journey. We did a space with stock tweets, but just to let you know, it's been more than I guess 7 years since I am basically there in the market. Since I was in my SYBMS, since then I have been doing technical analysis, so to speak, classical charting. Okay, most of you would be seeing my charts on daily basis, and that's all about me. Okay, and Devraj, you can go on. You can basically share your experience, and you can basically let these people know about you. Yes. So actually, just a brief story. Otherwise, people will say, "यार concept सीखने आए थे यार क्या बता रहे हो story अपना आ रहा है." Correct. So nothing. I don't take your much time. Just I and Sunil met in the college only. We were very focused on the market. But later, when I was doing job in HDFC Security. Then I did an internship in IFL Security, where I and Sunil, met again. And during the lockdown period, we decide, we are trading ourselves. Let's do something that we can help other fellow traders. And because of this reason, we started this Chartmojo. So I will give my introduction, at a later stage. I think so. We should start this space, Sunil. Yeah. Okay. Exactly. We are already late by a few minutes, I guess. Yes. So okay, I'll start now. So this is about me and Devraj. So first of all, I'll talk about this breakout trading strategies. Okay. So first of all, guys, you need to understand that why do we do breakout trading? So basically, if you see, breakout trading defines the momentum. Okay, breakout. So whenever you see any sort of breakout on any sort of security, that could be cryptocurrency or commodity or any stock, okay, breakout trading defines the momentum of a security. And हम लोग क्या कर रहे हैं? We are basically chasing the momentum. ओके सो इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको ये चीज समझना है कि हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं. वी आर गोइंग विद द मोमेंटम. ओके तो वहां पे वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स विच आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग इन द सेंस ऑफ हाई मोमेंटम. तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो हाई मोमेंटम कैसे पकड़ना है. आई टॉक अबाउट दोज, आई वुड से सम ऑफ द स्ट्रेटजीज, एंड देन विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द स्टॉक्स. और मैं जो पास में स्टॉक्स डाले थे वो भी डिस्कस करेंगे. एंड अभी जो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, so first of all, we'll be starting with the ATH breakout. So now what we'll do, we'll just discuss 4 to 5 breakout trading strategies which you can use and identify the breakouts. तो इसके अंदर first thing we have is the ATH breakout. So ATH breakout is nothing but whenever you see any company breaking the all time high, okay, so that time you see so that time you will see when the company breaks the all time high, the company will continue to make higher highs and the price of the security will keep continuing higher. Why is that? Because see, you have to understand that market is not run by us. Market is run by smart market participants, so to speak, FIIs, DIIs and professional traders. तो वो लोग पूरा मार्केट को चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते हैं. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट अगर वो लोग मार्केट को चला रहे हैं और उनका पैसा जहां पे जा रहा है, so wherever the smart money is going, we have to go behind the smart money. It is not like we are very smart, we are identifying this pattern, that pattern, and we are getting that pattern and we are capitalizing on that. All that is okay, but first thing you have to accept that retail
participant does not move the market. It is the smart money which moves the market, which involves FIIs, DIIs, professional traders and so on. तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि एटीएच ब्रेकआउट. तो एटीएच ब्रेकआउट आपको देखना है कि आपको वो सारी कंपनीज देखनी है जो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रही है. अब उसमें आप समझो कि 10 कंपनी आप आइडेंटिफाई करते हो, तो वहां पे यू हैव टू सी दैट द कंपनीज विच आर कंसोलिडेटिंग एट दी ऑल टाइम हाई. मतलब सी आई हैव अ सेटअप कॉल्ड टीसीबी. अभी हमारे पास में स्क्रीन नहीं है, नहीं तो आई हैव यू नो हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स व्हिच आई कुड हैव शोन यू एंड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो भी कंपनी एटीएच को मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देगी, वो कंपनी को हमें पकड़ना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए. और वहां पे सबसे सो वन नगेट आई विल गिव यू इज दैट सी देयर विल बी टू टाइप ऑफ मूव्स. अंडरस्टैंड, देयर विल बी टू टाइप ऑफ मूव्स. एक तो आपका यू नो समझो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल है. तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा कि जहां पे वो ब्रेकआउट का मिलेगा, सो द बैरियर विच इज देयर, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल में. दोज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल चार्टिंग. तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे सबसे पहला स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा. सो मेक अ नोट ऑफ दिस. जो भी कंपनी एटीएच वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अगर वो ब्रेकआउट के पहले थोड़ा कंसोलिडेट होके जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि वहां पे all the weak hands are getting out from the market. And you know, if the stock is not falling from there on, if the stock is not falling from that level, it means that like all the big people and the smart money is making the positions and accumulating the stocks. A lot of people tell me, Sunil, how do you know कि you know accumulation है और distribution है? जब तक कोई भी कंपनी कंटिन्यूएशन के अंदर आपको यू नो कोई भी पैटर्न के अंदर, कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर जब तक ब्रेकआउट मिलता जाएगा, यू हैव टू कीप होल्डिंग ऑन टू दैट पोजीशन. तो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट वाज एटीएच ब्रेकआउट. तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टॉक्स व्हिच आर ब्रेकिंग फ्रॉम द एटीएच. एंड वहां पे आई टोल्ड यू लुक फॉर दिस टीसीबी, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, जिसको शायद बिल्डअप भी बोलते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में. Second चीज which I want to share with you is the 52 week high breakout. अब ये क्या नई चीज है? ये नई चीज कुछ नहीं है. दिस इज सो बेसिकली सी व्हेन यू लुक फॉर एनी स्टॉक्स एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एटीएच, तो वो सबसे मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है. लेकिन 52 वीक समझो कि एक कोई कंपनी है, उसने 10,000 का हाई बनाया था एक साल पहले, लेकिन राइट नाउ दैट कंपनी इज एट 52 वीक हाई एंड दैट प्राइस इज होवरिंग एट 800. तो वहां पे देखो, सबसे पहले यू नीड टू सी द ट्रेंड इज अप. ओके, इफ द ट्रेंड इज अप, देन वी नीड टू सी इज द कंपनी इज होवरिंग, is consolidating around the 52 week high area. तो सेम कॉन्सेप्ट आप जो एटीएच में लगाते हो, the same concept you have to apply to the 52 week high strategy as well. ओके, तो वहां पे आपको सेम कॉन्सेप्ट ढूंढना है कि अगर कोई भी कंपनी 52 वीक हाई को ब्रेकआउट कर रही है, तो वो सारी कंपनीज कौन सी हैं, और उसके अंदर कोई भी कंपनी 52 वीक हाई को ब्रेकआउट कर रही है, आई एम टेलिंग यू गाइस, नोट इट डाउन, आपको वहां पे कोई ना कोई टाइप का पैटर्न मिलेगा. आपको या फिर कोई क्लासिकल चार्टिंग का पैटर्न मिलेगा, आपको या फिर कोई कंटिन्यूएशन टाइप पैटर्न मिलेगा. तो मेरे पास में आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, जितना मुझसे होगा आज मैं सारे एग्जांपल के साथ में आपको आई बेसिकली लेट यू नो. आप चाहिए तो यू कैन ओपन द स्क्रीन ऑफ योर ट्रेडिंग व्यू एंड साथ साथ में आप स्टॉक्स देखने. Sorry for interrupting. Just as you told, you have a chart example. Just a small request from the traders who are part of the session. Once Sunil sir is explaining the chart example, you can open the chart which is in front of in your laptop or a phone, so it will be more comfortable for him to discuss and for you to understand. Very simple. Correct. Makes sense. Okay. So see, so I told you about this 52 week high breakout. So the first concept is ATH breakout. The second concept is 52 week high. 52 week high के अंदर I told you कि आपको अलग अलग पैटर्न्स मिल सकते हैं. ओके, और देखो हमारा मकसद यही था. व्हेन वी स्टार्टेड चार्टमोजो, आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल वर पुटिंग अप द चार्ट्स, लेकिन द पीपल वर नॉट हैविंग दैट क्लियरिटी, द पीपल वर नॉट गिविंग यू द हिस्टोरिकल एनालिसिस व्हिच शुड बी डन. अब आप बोल रहे हो कि नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों बोल रहा है तू. सो व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज सी, जब आप कोई भी चार्ट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हो ना, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है. जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं ना कि व्हेन वी लुक एट चार्ट्स वी अंडरस्टैंड व्हाट प्राइस इज राइट टू गेट इन, बट व्हेन वी लुक एट फंडामेंटल्स वी अंडरस्टैंड इज देयर अ वैल्यू इन द कंपनी. सो जब कोई फंडामेंटल को देखता है, दे अंडरस्टैंड कि इसके अंदर वैल्यू है, दे गेट द कन्विक्शन. तो जो भी टेक्नो फंडा करता है ना, वो फंडामेंटल इसीलिए देखता है कि उसको कन्विक्शन मिलता है. The same way when we do technical analysis के अंदर जब आप एक साल का डेटा देखते हो और उसके अंदर आपको कोई पैटर्न्स
the moment you spot any patterns, you get that conviction ki yes, this company is breaking out on every continuation patterns, and the moment you will get breakout from the current levels, और जो भी आप कोई भी strategy use करे, ATH breakout 52 week high, तो वहां से जैसे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, यू विल गेट दैट कन्विक्शन. व्हाई यू विल गेट दैट कन्विक्शन? बिकॉज यू हैव बीन सीइंग दिस कंपनी ब्रेकिंग आउट इन द पास्ट एज वेल. और वही मेरा रीजन था कि जो भी चार्ट्स मैं डालता हूँ, ऑल ऑफ यू मस्ट बी सीइंग ऑन द ट्विटर हैंडल प्रोफाइल ऑल्सो. तो ये सारे चार्ट इसीलिए मैं डालता हूँ बिकॉज यू कैन बेसिकली मेक अप योर कन्विक्शन, और वो आपको देख के कॉन्फिडेंस आएगा. सी, चार्ट रीडिंग इज ऑल अबाउट हैविंग परसेप्शन and having all together different perception. आई एम टेलिंग यू, पीपल आस्क मी, सुनील आप कितने चार्ट देखते हो, आप ये सारे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप ये ब्रेकआउट जोन रोज कैसे डाल पाते हो, ब्रेकआउट स्टॉक्स, रिवर्सल कैंडिडेट्स, स्क्वीज कैंडिडेट्स कैसे डालते हो? इट इज वेरी सिंपल. आई डोंट सी, आई हैव मेनी स्कैनर्स, but I don't use basically any scanner. I scan through, I would say, more than 500 charts on daily basis, and I mostly see, I'll be saying this in the open space, that मैं CNX 500 को follow करता हूँ. If at all I find any opportunity in the mid cap space or in the small cap space, तो वो मैं कभी कभी डाल देता हूँ. लेकिन my universe is CNX 500. ओके, और यही मेरा पर्सपेक्टिव रहता है, यही मेरा अप्रोच होता है बेसिकली एनालिसिस करने का. So the second concept which I shared with you was the 52 week high breakout concept. The third one is the moving average breakout. अब एक चीज आप समझ लो, when we learn classical charting, when we do classical charting, we have two things to know from. We have continuation patterns and we have reversal patterns. कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में क्या होता है कि आप जैसे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन देखते हो, या फिर आप कोई बेसिकली आप सी एंड एस कंटिन्यूएशन टाइप पैटर्न देखते हो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, उसके अंदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना है? नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सुनील, रिवर्सल पैटर्न के साथ में हाउ कैन यू डू ब्रेकआउट ट्रेडिंग? ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन. If you see companies like Balaji Amines, or if you see companies like GNFC, Deepak Nitrite और ICICI Bank, ये कोई भी कंपनी का आप चार्ट लगाओ, you will see 25 to 30% का करेक्शन. लेकिन जब भी करेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, you have to understand कि कंपनी का प्राइस एक साथ में एकदम से ऊपर नहीं जाएगा. ओके, वो टाइम लेगा. तो जब वो टाइम लेगा ना, over there it will make some of the reversal pattern. Now you must be wondering वो some of the reversal pattern क्या है? You will see a lot of double bottom patterns right now. I will tell you 15 stocks जहाँ पे I can see double bottom patterns, and those are breakout soon. मतलब अब तक breakout नहीं मिला है, वो भी मैं आपको नाम दूंगा आज. लेकिन मकसद ये है, मुद्दा मैं ये बता रहा हूँ, ओके, कि आप जो बेसिकली स्टॉक करेक्ट होता है 25% 30%, उसके अंदर भी यू कैन स्पॉट रिवर्सल पैटर्न्स लाइक ट्रिपल बॉटम, और आई वुड से the double bottom, or I would say rounding a bottom. और आप ऐसे पैटर्न्स को स्पॉट करके over there also you can do breakout trading. Okay, so I have written down few stocks name, ठीक है, जो मैं डिस्कस करूंगा. If you look at Nazara is a DB. Okay, it's a double bottom and it is giving you breakout. तो now you must be wondering, सुनील, आपने बोला कि रिवर्सल पैटर्न्स में भी ब्रेकआउट होता है, कंटिन्यूएशन में भी होता है, लेकिन जब भी कोई भी कंपनी रिवर्सल के वहां से ब्रेकआउट दे देगा, तो फिर क्या होगा? वो ऑल टाइम हाई के वहां पे आ रहा है ना. मतलब मैंने ये समझाया कि अगर आप ये कंपनी को देखो, GSFC, ये बना रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, अभी असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, शायद 25-30% करेक्ट हुआ था. अभी जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा या फिर 52 वीक हाई पे जाएगा. अभी आप प्राइस देखो थे GSFC का, तो वो आपको सेकंड ब्रेकआउट मिलेगा. तो पहला ब्रेकआउट आपको देखना है, द फर्स्ट ब्रेकआउट व्हिच यू हैव टू सी इज फ्रॉम द असेंडिंग ट्रायंगल, जहां पे बेस बना रहा है. When the company breaks out from the 52 week high or ATH, that is like a double confirmation. Why? Because you got the breakout on the DB double bottom, and then now you are getting the breakout on the all time high. और जब आपको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, आपको सी, आज मैंने चार्ट डाले हैं, आप जाके देखो, अभी मैंने चार्ट डाले हैं, ठीक है, यू सी वहां पे आई हैव मेड असेंडिंग ट्रायंगल्स. तो वो सारे स्टॉक्स आपको कोई ना कोई पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट करते हुए मिलेंगे. So this was my, I guess, third concept which I explained. That was मूविंग एवरेज. सो या अभी इसके अंदर मूविंग एवरेज ब्रेकआउट का आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, आई विल टेक सम टाइम, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ. मूविंग एवरेज ब्रेकआउट का ये क्या स्ट्रेटेजी होता है? देखो, सब लोग क्या करते हैं, देखो मार्केट में देयर आर डिफरेंट पीपल जिनका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है. तो मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का ये सिस्टम ऐसा होता है कि पीपल लुक एट 20 MA, पीपल लुक एट 50 MA एंड 200 MA.
I am telling you, I will tell you 10 stocks. If I tell you these companies also, आपको चाहिए तो मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है? If you look at Nazara, if you look at Nosil, if you look at ICIL, गुजरात अल्कली, ये सारी कंपनीज क्या कर रही है पता है? आपका करेक्शन दिया 25-30% का, और ये शायद डबल बॉटम बना रही है, कोई HNS बॉटम बना रही है. वहां पे एट द सेम टाइम, इफ यू गेट दैट कंपनी ब्रेकिंग अबव 50 डेमा और ब्रेकिंग अबव 20 डेमा, दैट इज लाइक अ प्लस साइन फॉर अस. देखो, आपको पहले ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी समझाता हूँ, लोग कैसे क्या करते हैं मार्केट में. जो लोग मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग को यूज करते हैं, वो लोग खाली देखते हैं कि कौन कंपनी 50 एमए को ब्रेकआउट कर रही है और कौन सी कंपनी 20 एमए को ब्रेकआउट कर रही है, 200 एमए को ब्रेकआउट कर रही है. लेकिन हमको वैसा नहीं करना है. वी डोंट हैव टू डू दैट. व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक द सिग्नल वेरी स्ट्रांग. In that case, we have to look for the reversal patterns. Okay, and at that reversal, we have to integrate that reversal with 20 DMA or 50 DMA. And I'm telling you, ये जो stocks का नाम बताया ना, आपको चाहिए 10 stock और बता दूंगा मैं. If you look at let's say your FinPipe, if you look at Dixon, if you look at DCM Sriram, if you look at Birla Corp, ये सारी कंपनीज को आप देखो, जो भी रिवर्सल पैटर्न के वहां पे ब्रेकआउट दे रहे हैं ना, वहां पे आपको 20 एमा और 50 एमा के वहां से ब्रेकआउट मिल रहा होगा. अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छा साइन है, एंड दैट इज लाइक अ प्लस साइन फॉर अस. तो हमें खाली नेकेड ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करना है. वी हैव टू integrate this moving average breakout trading strategy with classical chart patterns, and that too reversal classical chart patterns. I hope you must have understood this. Okay, so the fourth concept which I'm going to explain is the pure play classical patterns. अच्छा ठीक है, what is this? अब मैंने आपको ATH एक्सप्लेन किया कि ऑल टाइम हाई पर ब्रेकआउट दे रहा है 52 वीक, वो भी मैंने आपको समझाया, और ये मूविंग एवरेज भी समझाया रिवर्सल के अंदर. अब ये नया क्या है? क्लासिकल पैटर्न्स. सो क्लासिकल पैटर्न्स, ये जो मैं समझा रहा हूँ, इट हैज रिसेम्बलेंस विथ द कंपनीज विच आर लेट्स से ब्रेकिंग आउट राइट नाउ. सो लेट्स से कोई कंपनी का ऑल टाइम हाई दूसरा है और कोई कंपनी आपको ब्रेकआउट दे रही है. तो इफ यू लुक एट द स्टॉक्स, एंड आई विल बी टेलिंग दिस इन ओपन स्पेस, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओ, वहां पे मैं रोज मैं पूरा हिस्टोरिकल डेटा के वहां पे भी मैं पैटर्न्स बना के देता हूँ, ताकि यू कैन बिल्ड द कन्विक्शन. सी, chart trading is not about only taking positions. Chart trading is about having that different perspective, having altogether a great perspective on price action. तो क्लासिकल पैटर्न्स का सेटअप ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, कि आपको देखना है पैटर्न्स लाइक असेंडिंग ट्रायंगल, और इसके अंदर आपको क्या देखना पता है? यू टेल मी, यू विल लुक एट रिवर्सल स्टॉक्स, रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स. इसके अंदर यू ओनली हैव टू लुक एट द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, such as you have to look at HNS continuation, you have to look at ascending triangle, you have to look at cup and handle. Okay, ये सारे पैटर्न्स, ये जो क्लासिकल चार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर इंटीग्रेट करना है. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इफ यू लुक एट माय टुडेज पिक, लेट्स से मोंटे कार्लो, तो उसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है, दैट इज असेंडिंग ट्रायंगल. ओके, सो इफ यू सी दैट पैटर्न, एंड दैट इज लाइक अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके, सो you can use classical patterns which are continuation patterns, not the reversal patterns. और वहां पे आपको जो भी कंपनीज मिल रही है, वहां पे आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सेट कर रहा है. ओके, एंड दैट इज क्वालिफाइंग योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन बिल्ड योर पोजिशंस. द फोर्थ कॉन्सेप्ट which I want to explain is the volatility contraction pattern. So now what is this? So ये बेसिकली ये एक ऐसा सेटअप है, इसके अंदर आपको व्हाट यू हैव टू सी, इसके अंदर यू हैव टू सी द कंपनीज विच आर consolidating in a contraction phase. Like if I give you an example, you look at the chart of so many ceramics. So many ceramics का चार्ट देखोगे, that was consolidating in a sideway range. Okay, so let me just pull up the chart of this company. You would see this company was forming up a triangle type formation. This company was forming up a triangle type formation. Okay, and then this company gave you breakout at 863 levels. The moment it gave you breakout, it started getting momentum, and then you can see this company right now is on the verge of breaking out its level of 973. So this is like a resistance level which it might break. तो आपको वो देखना है कि जो स्टॉक्स एकदम स्क्वीज हो रहे हैं, जो स्टॉक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी ऑल टाइम हाई के वहां पे. गाइस अंडरस्टैंड, जो स्टॉक्स साइडवेज में जा रहे हैं, I'll name few stocks. If you look at the chart of Carborundum Universal,
if you look at the chart of Greenwell, if you look at the chart of Radico Khaitan, if you look at the chart of so many ceramics, these are the stocks you will see wherein we could have seen that volatility contraction वाला phase. तो ये कहाँ देखना है, ये आपको स्टॉक्स के 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पे देखना है कि कौन से स्टॉक्स स्क्वीज हो रहे हैं. See, why does the squeeze happens? Squeeze happens so that weak hands can be taken out from the security, from the respective security. तो वहां पे जब आप वो चीज देखोगे, वहां पे हमें देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है. अगर ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट इज लाइक अ प्लस सिग्नल. ओके, एंड दैट वी हैव टू सी. See, if you are not getting, I would say, strong volume with a breakout from that squeeze or from that volatility contraction pattern, it means that breakout is not the real one. वहां पे ये जो ब्रेकआउट मिला है आपको रिटेल पार्टिसिपेंट के पार्टिसिपेशन के द्वारा मिला है. अगर वो ब्रेकआउट आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, इट शोज दैट द गुड स्ट्रेंथ इज देयर एंड बिग पीपल आर बाइंग दिस कंपनी. एंड ये मैं कोई नया नहीं, ये नया चीज नहीं सिखा रहा हूँ. All the people in the market have been using the same concept, but what I'm trying to tell you is that we have different setups which can make the use of, and we can do this breakout trading. तो ये जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपको सारी कंपनी ढूंढनी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. ओके ओके, एंड एक और कंपनी अगर आपको बताऊं, राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट देख लेना. दैट कंपनी वाज आल्सो गोइंग थ्रू द टाइट कंसोलिडेशन. एंड जब आपको कोई भी कंपनी ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई के वहां पे, यू विल सी लाइक narrow range candles. Whenever you will see narrow range candles at the all time high, and you will see at the same time contraction phase or volume contraction, that is like a very good, keep that company on your radar, and then you can tab onto that opportunity the moment you get the breakout on that. Okay, so this was the, I guess, fourth or fifth concept. And last one is Darvis Box. Okay, so Darvis Box के अंदर what happens is, see, there's this thing called participation. So there's this thing called participation phase. जब आप कोई भी कंपनी का ट्रेंड को चेंज होते हुए देखते हो ना, तो वो कंपनी, ये देखो, ये कोई नया चीज नहीं सिखा रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू द वेरी सिंपल थिंग कि एक स्टॉक होता है ना, वो अक्मुलेशन फेज से जाता है, ओके, और वो पार्टिसिपेशन में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, वापस डिक्लाइनिंग फेज में आता है. अभी कोई भी कंपनी, whichever company which is breaking out from the patterns like rectangle patterns, or I would say the box type patterns. Okay, this concept is known as Darvis Box Theory. Okay, and in this theory what do we have to see is कि जब भी कोई भी कंपनी ट्रेंड चेंज करता है, लेट्स से 2 साल से कोई कंपनी का डाउन ट्रेंड था और वहां पे एक साइडवेज फेस आता है at the bottom of the trend, and you see any sort of reversal pattern. जैसे ही वहां से ब्रेकआउट मिलता है, आपको ट्रेंड चेंज का पता चलता है. अब स्टोरी आगे है. स्टोरी में क्या होगा, जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिला, वहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ. लेकिन जैसे ही वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि वो वन वे में ऊपर चले जाएगा. इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ सो मेनी सिरेमिक्स, वो अगर उसका अप ट्रेंड देखो, तो वो बीच बीच में आपको एक पैटर्न बनाया. दैट पैटर्न इज I would say box type pattern or a rectangle formation. And rectangle formation in classical charting we call it a continuation pattern. और जैसे ही आपको कोई भी कोई भी कंपनी के अंदर ये जैसे ही रेक्टेंगल पैटर्न मिलेगा ना, देखो एक चीज समझाता हूँ, वो रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन मिल जाए, तो वहां पे देखो कोई नहीं बता सकता कि कभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज आने वाला है और ये कब तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी. खाली प्राइस एक्शन है वो हमें बता सकता है. कैसे बता सकता है? यू हैव टू सी कि ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बीच लाइक प्राइस ऊपर चले गया, एंड वहां पे एक कंसोलिडेशन वापस पैटर्न मिला लाइक इन रेक्टेंगल फॉर्मेशन. तो वहां पे जैसे ही हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, दैट इज अ साइन दैट वाज अगेन एन accumulation phase, and basically the participation will continue towards the uptrend, and the price of the company is likely to go towards upside from here on. As soon as you keep getting that rectangle continuation pattern, you have to keep tabbing onto the you have to keep tabbing on the opportunities. Now you must be asking कि तो ये कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल कब आने वाला है? So you never know. वो तभी पता चलेगा when you will see again the same box type pattern, when you will see the rectangle pattern, and at the same time you will see the breakdown from the support zone. Over there we can at least guesstimate that here the story is over and the tide might turn towards the counter way.
और I would say the counter trend in the sense अगर प्राइस ऊपर जा रहा था तो वहां से शायद नीचे आने के संकेत मिल सकते हैं वो कंपनी के बेसिकली वो कंपनी के चार्ट से. So I guess I have summarized this. See, I mean, so basically I have different setups. और ये चीज मैं सबको बोलता हूँ कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो आपको ऐसा नहीं है कि यू कैन ओनली ट्रेड ब्रेकआउट और यू कैन ओनली ट्रेड रिवर्सल्स. when you play cricket, understand, when you play cricket, when you go for playing the cricket, अगर pitch अगर green है, okay, so then that pitch will be good for, I would say, fast bowlers. That pitch would be good for the strong hitters. लेकिन if the pitch is dry, that pitch is good for spinners. तो सेम तरीके से जो एनवायरमेंट होता है मार्केट का, वैसे आपको अपने गियर को चेंज करना है. यू हैव टू शिफ्ट योर गियर, ओके, यू हैव टू चेंज द गियर. सो व्हेन यू सी, देखो अभी आपका जो निफ्टी करेक्ट हुआ था, व्हेन द निफ्टी करेक्टेड वेरी सिग्निफिकेंटली, दैट टाइम यू गॉट डिसेंट करेक्शन ऑन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. तो वहां पे we should play or we have to play the reversal strategies only. वहां पे आप ब्रेकआउट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, और ब्रेकआउट्स मिलेंगे ना तो फिर भी इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ है. तो वहां पे यू हैव टू बी अडेप्टेबल. जब भी आपको मार्केट करेक्ट होते हुए दिखता है 15-20-25%, वहां पे वी हैव टू प्ले MTR, mean to reversion strategies. When the market is breaking all time high, or when the market is making its way towards upside, at that point in time we have to see the breakout setups. और तो मैं मेरा gear change करते रहता हूँ. You will see me taking MTR baits using harmonics and Elliott wave. You will see me taking continuation, or I would say the breakout trading bets using classical charting, ATH breakout, 52-week high, and your volatility contraction setup and Darvis box and so on. एंड मीन टू रिवर्जन ट्रेडिंग आप क्लासिकल चार्टिंग करके भी कर सकते हो. सो व्हाट आई डू, मैं ब्लेंड करता हूँ ये चीजों को. सो दिस इज व्हाट आई डू एंड आई फील मतलब ये पीपल शुड डू. इट इज नॉट लाइक आप सी बेसिकली नो वन नोज फॉर हाउ लॉन्ग द मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अपसाइड. राइट नाउ घोड़ा गधा सब भाग रहा है. Cats, dogs, everything is going up right now. When the market goes up, every stock goes up. But you never know when the tide will change. When the tide will change, and if you do not shift your gear, you will go naked. Okay, when you go naked, you will understand what is happening with my account. And I remember Vishal Mehta saying that the best way to see whether your strategy is working or not is to look at your own portfolio numbers. If your portfolio is not performing well over the last 1 month, or if you're not having gain, it means you are not you have not changed your gear basically. And if you have not changed your gear, in the sense you have to do something. So that way guys, आप लोग see, you would have seen me, जो मेरा पर्सनल हैंडल है वहां पे मैं थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में डालते रहता हूँ, एलियट वेव्स, हार्मोनिक्स, ताकि लोगों को और ये सब लर्निंग मिले. एंड हमारा मकसद कभी भी एकदम सिंपल रहा है, हमारा इंटेंशन कभी भी सिंपल रहा है कि हमें सिंपल चार्ट देने हैं. And like on basically Chartmojo, you will see us putting up content with respect to classical charting. You can do MTR using reversal patterns of classical charting. You can do breakout trading using the continuation classical chart patterns. Okay, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको MTR के लिए हार्मोनिक सीखना पड़ेगा, एलियट वेव सीखना पड़ेगा. No, it is not like that. But it is just that when you learn more more number of concepts, you build more conviction. Like the way you read any company, and जितना आप वो कंपनी के बारे में पढ़ते हो ना, उतना आपका एक वो confirmation bias type आपको understanding मिलते जाता है कि yes, I am getting strong hold on to this company, and this company has good future and ये वो. So basically, see, I hope you must be understanding what I'm talking about. So that way, when you look at different setups, you get more conviction. The moment you get more conviction, you are through with your strategy. बाद में stop loss hit होए तो वो चलेगा. देखो, stop loss hit होए तो we have to book the loss, and we have to look for another opportunity. And basically I tell every beginner in the market that जब आप अपना losses को book करना सीख जाओगे ना, then I guess you would have won the 50% battle. 50% battle आपने वही जीत गया. You have won the battle there only when you learn booking the losses. So this is from my side. Now if you want to ask me anything about MTR, about breakouts, about MTR strategy or breakout strategy, or about any stocks, okay, you can ask me. But before that,
I would want that Devraj might also have a few insights to give us, and he's an option buyer. So if you see the HDFC Bank, okay, this has given the leadership in the breakout from the banking space, and this has crossed 200 DEMA, okay, from bottom, it has cut the 200 DEMA. So now why this 200 DEMA? Because if you see the Nifty chart pattern, okay, so Nifty has formed a descending broadening pattern and uska breakout mila. We have got that breakout. So Nifty is also has turned from from the 200 DEMA level, 100 point upper say Nifty has turned up. This was seen in the Feb 2020, okay, just before the budget last year. We have seen the same thing, 100 point plus say Nifty has turned. The same story is repeating again, okay. Now the thing in HDFC Bank is if we see channel pattern giving breakout, also 200 DEMA is getting taken out. This confirms that the trend will remain in this stock. Now, if HDFC Bank is up, we see Bank Nifty also moving up. Then we see the second best, which is ICICI Bank. Now, if we see ICICI Bank has been outperforming other, okay, if we simply compare the chart, we'll see ICICI Bank is outperforming the other bank. Here we have got double bottom pattern, okay. Now, here we have got double bottom pattern. So, double bottom pattern, okay, it's not like the HDFC Bank, which was showing one way and 200 DEMA bhi broke ho gaya tha. ICICI Bank mein, this is the second one to give breakout. Okay, today it's if we see sustained momentum in the tomorrow market session, we'll see we get a confirmation of double bottom breakout. And here see the 50 DEMA is also taken out with the double bottom breakout. So what Sunil was saying, ki we need to find this kind of setup when the stock has taken a beating. And why this stock have taken a beating? Now we all know the FIs were net seller in the market, and these were their favorite stocks. So we see a good correction in the banking side. Now Can Bank. Now this is an interesting stock. So first of all, if you see the chart of PNB, Bank of Baroda, and all this in this theme, SBI is the only bank one should look to trade. I mean. So as a trader, we find in the option good opportunity. Sometime in PNB Bank and Bank of Baroda, cheap options are there. When SBI is running, we see a good run up. But Can Bank is outperforming other. Now this has formed a falling wedge. Okay. Now you see, I have told you three different type of bank. They have three different type of pattern forming in them. Simply these three banks are also having three different story. Okay, three different narration. Now we always, अभी ऐसा नहीं है कि we always need to know the narration कि भाई क्या story चल रहा है. Chart pattern are simply saying the same thing. कि अपने को पता है कि ICICI Bank is stronger than the other क्योंकि उसने double bottom के correction से breakout दे रहा है. अब Can Bank बाकी PSU से it is showing more strength on the chart because it might give a breakout from a falling wedge. Okay. So also, now I want to talk about one stock which is, in connection with the, finance, this thing, banking and finance, and housing finance company, which is LIC Housing Finance. Now I am taking this. Okay. So one more case I would like to add, in this breakout. Okay. So we say breakout right now. We are only talking about a stock going up. So we say breakdown. Okay. For stock when it's give a downward momentum. So if you see LIC housing chart, it has formed an HNS top pattern, okay? और वो HNS top का confirmation we have also get, okay? उस chart में हमको HNS top का confirmation मिला था, but during this market reversal, the stock is again running up and it can, soon cross its neckline. I think so 390 का level आएगा somewhat there. If it goes above that, there will be a confirmation of fear. But now this, in LIC housing finance, you will see if there is this breakout confirmed, now it will go, the reaction will be very fast here because there might be a chances of bear trapping there. So within this same space, we see different type of setup and one can simply churn this. We know HDFC Bank का target पहले आएगा, okay? उसमें channel target खत्म हुआ, half quantity you can sell and then you can churn your this thing into the second best, ICICI Bank, उसका confirmation आएगा, then churn that into the Can Bank, अगर उसका breakout आया. Last में we will see LIC giving a breakout. So you can just simply form a lineup within a sector which is giving you a breakout, okay? So
if you want, I can give you one more example like this. In the this fashion space or your footwear space, fashion space. Would you like to hear one more example like this? Yeah, Devraj, Yes, you can go ahead. Yeah. So see now, simply I will take three company here also. We see different story forming up on the chart. We can take Page Industry. Now Sunil was talking about ATH kind of a setup. Okay, so if you see Page Industry, ABFRL and Bata. Now these three company will take. The first we are taking Page Industry. Okay, this is in the innerwear. Okay, so this company, we'll see the consolidation of this company was in a channel formation. Okay, or this channel is not very, this channel is steep. This is not making a very, you can say this channel is made around 25-degree kind of angle. So this is the first bet which one can take on the this fashion in this space. Why I'm talking, why I'm selecting this counter. If you see Bata, now Bata has also formed a falling wedge. Okay, so isme the correction is steep. Okay, now this Bata is perfect for reversal candidate. So as Sunil was speaking, when there is a good correction, Bata corrected almost, I think so, 400 rupees from the top, around 15% के आसपास correction है you see. So Bata will qualify for that. But if I want to ride the move first, I will like to trade first on Page Industry, then I will take trade on Bata. Now ABFRL, now this is an interesting this candidate. This has formed a symmetrical triangle. Okay, the pattern is symmetrical triangle. We might get a confirmation in the next trading session, which is 5th. So this has formed in the mids. Okay, इधर भी correction आया था. And this has formed in the mids. So likewise, by looking at this kind of breakout, one can time to churn the bet. अगर आपने you have taken 3-4 lot in one particular counter, then you can churn some profit and go to the next counter where you can see the second breakout will come, or you can say those name which are the second or third in their market share category, and like this. So Sunil, if you want to add anything in this, you can. Yeah. I would like to add one more thing. Okay. So that is like a good learning for everyone. So guys, so as I talked about like different setups like ATH, 52-week high, moving average breakout, classical patterns, volatility, contraction, and Darvis Box and so on. Now I need to tell you one more thing. That is, one thing also you have to keep in mind that आप ये exercise करो, ठीक है? What you do, you identify the stocks. Okay, you identify the stocks which are under the 5%. So basically there's this company which is about to give you breakout, but that company is under 5% from the ATH. That company is under 10% from the ATH. If I give you a few examples, if you look at Adani Enterprise, if you look at Fine Organics, मैं सारे stocks का नाम बता देता हूँ. If you look at Astral, if you look at Power Grid, if you look at Jindal Stainless Steel, okay, JSL, if you look at Radico, if you look at Timken, all these companies are available in the region of 5% to its ATH or 52-week high. अब मैं ये चीज जो बोला ना, इसके अंदर you do one thing. जो भी stocks अपने 5% के वहां पे है and that company is about to give you breakout, you look for a stock. Okay, ये सारे ये पांच जो भी मैंने 6-7 स्टॉक बताए हैं, इसमें से you look for a company which is giving you a tight closing build up. What is that? That is nothing but जो अपने 5% के वहां पे है और कंसोलिडेशन कौन सा कर रहा है. See, you have to understand, अगर कोई भी कंपनी पैराबोलिक ब्रेकआउट देता है ना, पैराबोलिक ब्रेकआउट मतलब कि जो उसका सपोर्ट था वहां से वो आपको ऑलरेडी सारी ग्रीन कैंडल बनाते जाता है एंड देन फिर ब्रेकआउट देता है. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ KDDL. ओके, सो लुक फॉर दिस कंपनी KDDL. इसने क्या किया था? ब्रेकआउट तो दिया, पैटर्न भी अच्छा था, लेकिन इसने पैराबोलिक ब्रेकआउट दिया था, इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं दिया. तो पैराबोलिक ब्रेकआउट में देखो जाहिर सी बात है कि इफ एनी कंपनी which has already advanced, I would say 50%, 20% from its support, and that company has given you breakout, यार उसमें मैं definitely सोचूंगा कि यार इतना मूव आ चुका है, now what do I expect right from there on. So सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको ब्रेकआउट प्ले करने के लिए वही होगा कि look for the stocks which are trading under 5% horizon
फ्रॉम द 80H और 52-week हाई, और कंपनी का नाम भी बता दिया सबका, पावर ग्रिड, एस्ट्रल एंड ऑल दिस कंपनीज. जो कंपनी वहां पे साइड वे कंसोलिडेशन में है, look for that company, keep that company on your radar, and you will see, you will getting very decent setups. Okay, तो ये चीज है. Okay, and at the same time, so see, like when I used to talk to Nirav bhai, okay, I guess Nirav bhai is also there. So when I used to talk to him, so he used to tell me, Sunil, it is all good that we are finding out breakout stocks and all these things, but can we preempt the breakouts? I was like, we cannot preempt the breakout, but we can use some tactics. Okay, so these were the tactics which I built around. These were the strategies which I built, wherein I saw the price action in such a way, I saw the price action panning out in such a way that जो भी कंपनी 80H के वहां पे या फिर 52-week हाई के वहां पे अंडर 5% के वहां पे होराइजन में ट्रेड कर रहा है, या फिर 10% के वहां पे 5%, बहुत अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि वो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और वो ब्रेकआउट दे सकता है वेरी सून. वहां पे आई एम टेलिंग यू, आपको कोई भी क्लासिकल पैटर्न मिल ही जाएगा. Okay, you will get ascending triangle, or you will get HNS continuation, or you will get C&H pattern. आज के मैंने 3-4 ब्रेकआउट डाले हैं, वो भी देख लेना. उससे you'll also get some of the examples. So this way you have to see companies. अभी वो KDDL है, अगर ऐसा कोई स्टॉक है उसको छोड़ दो. क्यों छोड़ना है? क्योंकि उसके अंदर डेली चार्ट लगाओ, 3-4 कैंडल ऑलरेडी है. तो वहां पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी नहीं है ऊपर जाने की, लेकिन द कंपनी विच हैज गॉन थ्रू दिस TCB सेटअप, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, ब्रेकआउट होने से पहले, that company will have more significant move when you see that company moving out from the barrier, from the hurdle, or so called resistance. So I guess this is all. Dekho, we can go on for hours and hours and talk about this breakout trading, because see, this will never end, because see, we have a number of things to discuss, but this is all which we can discuss for today. And I guess most of you have understood whatever I guess we talked about. Nitesh ji. Okay, great, fantastic. So, sir, can we take few questions if you don't mind? Definitely. As many questions as we can. Okay, we will try to answer everyone's question. Yeah. Okay, just the traders who have questions, just please send me a request. I will allow you to speak one by one. But Vikas, sir, I've allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Hey, hello, Vikas. How are you? Vikas, sir, I have allowed you. Yeah, hi. So I have a question regarding intraday, say, index option trade. So, the issue I face is most of the time the breakout fail on 1 minute chart. So, is there any better setup there? Okay. So, Devas, should I answer the question or just a minute? Vikas, sir, just mute your mic so you. Yes, sir. Sunil sir, you can go ahead. Yeah. So, Devraj, should I give the answer or you are good to go with this? Yeah, it's okay if you can give the answers. No issue. Okay. So, so as you ask this question, so see what you have to see. See, I have this concept called, tight squeeze setup. So, I'll give you this activity. You do this thing. You look for all the CNX 500 stocks, और या फिर आपके FNO के जितने भी स्टॉक्स हैं, आप जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर से आप देखो सबसे हाईएस्ट गेनर कौन सा है आज का. ओके, वो गेनर को ढूंढो और उसके 5 मिनट चार्ट लगाओ. ओके, जहां पे वो कंपनी आपको एक टाइट स्क्वीज देगा. ओके, एंड दिस एक्सरसाइज यू कैन डू ऑन CNX 500 ऑल्सो. आप खाली ऐसे स्टॉक्स देखो जो 10% 15% भागे हैं, और वहां पे आप 5 मिनट का चार्ट लगाओ और देखो कि वो टाइट स्क्वीज कौन सा हुआ है. सो आई हैव दिस सेटअप कॉल्ड टाइट स्क्वीज इंट्राडे ब्रेकआउट सेटअप. उसके अंदर व्हाट आई सी इज कंपनी 2% के अंदर ट्रेड होना चाहिए. Okay, so this is a criteria which you have to adhere to. The company should trade between the 2% momentum, and अगर कोई कंपनी 2% के अंदर से मूव करता है और फिर वहां से ब्रेकआउट देता है, you will see that company going up very decently. So Devraj, you can tell me a company. Yes. So let's say this sugar company, ये आज कौन सा था अपना? Dwarkesh. Yeah. Not Dwarkesh. Balrampur has gained good gainer in the FNO today. Yeah. Balrampur is there. So Balrampur Chini, if you apply, Sarji, and if you go to 5 minute chart, you just do this exercise. Okay, just go to 5 minute chart and just let me load this data point. It's not. Yeah. So
you will basically see the tight closing congestion phase, और वहां से when you see that company breaking out, you have to take the position. ओके तो अब नाउ योर क्वेश्चन वाज कि 1 मिनट पे बहुत सारे ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो वहां पे व्हाट यू हैव टू सी विकास जी इज दैट वो कंपनी कब पहला मूव देखना है, पहले का मूव देखना है. सी सबसे पहले आप क्या करो विकास जी, यू गो टू डेली चार्ट एंड सी वो कंपनी एटीएच ब्रेकआउट पे है या फिर 20-15% करेक्ट हुआ है. अगर वहां पे है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर वो रिवर्सल दे रहा है, तो वहां पे आपको देखना है कि ये कंपनी स्ट्रांग रह सकता है आज का दिन. ओके अगर वो मिड वे में है और उसका कोई ट्रेंड नहीं है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो देन आई वुड से कि उसका सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा. तो नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस बलरामपुर चीनी. यू आल्सो अप्लाई दिस चार्ट ऑन योर स्क्रीनर एंड यू सी कि ये ना 375 के आसपास इसने तगड़ा वाला कंसोलिडेशन किया. यू विल सी देखो 375 और 371, कैन यू जस्ट सी ये 5 रुपए के अंदर ही ट्रेड करा था. कब से 1035 3rd Jan. ओके कल ये 1035 से ये आई गेस आज के दिन तक साइडवेज था, लेकिन जैसे इसने ब्रेकआउट दिया यू कैन सी द अपसाइड. Yeah, I can see that. But my question was more related to index options, say Bank Nifty, which is very wild. Okay. So with respect to Bank Nifty, Devraj, you can take up the question, but you need to understand the concept. The concept will remain the same. Devraj, over to you. Devraj, am I audible? So Devraj, just turn on your mic and you can speak. I think your mic I is guess off. he's on mute. I guess he's on mute. Okay. I think he's again this app got crashed if I'm not wrong. Yeah. Okay. So no problem. CK. See, like I will reserve my comments over here because I don't trade options in futures. Okay, I only trade equity. Okay, cash. That is also basically your swing trading. Okay, so I would reserve my comment over here, but understand. You can. Okay, got it. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Sunil sir, I have allowed you to speak. You can just turn on your mic and you can speak. Yeah. So, and then, sir, not you, sir. One of the participant name. So sorry, Sushil sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Hello. Yes, good evening. Hi, Sushil. Myself सुशील. मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीकली ब्रेकआउट को कैसे देखें. Okay, weekly breakout को कैसे देखें? Yes, okay, yes. so you apply the chart of let's say this company, your Pidilite, which I have posted the chart today. You apply this. जरा मुझे थोड़ा सा ये क्रेप्स का दिखाइए, क्योंकि कल मैंने क्रेप्स बायो में देखा था ब्रेकआउट के हिसाब से. Okay, so the company name is Krebs. You are saying? Yeah. CRAPS. KREBS. BF. ये आप कौन सा कंपनी लेके आए हो? Okay, no worries. We'll just look at the price action and company कौन सा भी हो. Okay, we should just read the price action and understand the Krebs bio. Correct. Understood. No worries. Okay, so first thing you have to see on this company is that ये देखो इसका ट्रेंड ऊपर था and you want me to give you the weekly view, right? Yeah. Okay, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ था. ये करेक्ट हुआ था, आपको बताता हूं मैं. सो ये करेक्ट हुआ था अराउंड 25%. एज आई टोल्ड यू, जब भी आपको करेक्शन मिलेगा, आपको 20% का जब भी करेक्शन मिलेगा ना, वहां पे आपको यू कैन म्यूट योर माइक फॉर अ व्हाइल. थैंक यू. सो देखो ये करेक्ट हुआ था 20-25% अच्छा खासा करेक्ट हुआ था. बाद में इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया एंड ये जो कैंडल था डेली टाइम फ्रेम पे 30 दिसंबर को 30 दिसंबर को इसने ये स्ट्रॉन्ग ये कैंडल दिया था. तो इसने क्या किया, जो पिछला कंसोलिडेशन फेज था वहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया. सो नाउ अभी ऐसी जगह पे आपको देखना है कि इसका जो बेसिकली 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई है वो कहाँ पे है. तो ये था 207 के आसपास. तो जब तक ये ब्रेकआउट आपको नहीं मिलता, ओके, तब तक वी विल नॉट बाय दिस कंपनी.
Okay, so now you told me कि you want the weekly time frame पे view. तो पहली बात तो अगर आप इसको weekly पे लगाओगे ना, weekly पे लगाओगे तो then we are getting this resistance around this price called 205. We are getting the resistance around 205. तो आपको यहाँ पे ये जो स्टॉक है सुशील जी, ये स्टॉक आपको जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला आपको लॉन्ग पोजीशन लेना. ओके, लेकिन जब तक ये कंपनी आपको क्लोजिंग बेसिस पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं देता, यू विल नॉट एंटर द पोजीशन. By the way, it is, I mean, I would say really sorry, I did not explain the concept of fake breakout and fake outs. So when you do breakout trading, you have to understand these concepts very well. If you do not understand this concept, and no matter which pattern you know, you will not be able to tab, I mean, you will not be able to trade that pattern very handsomely, because you should know few nuances. अब इसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ. इसका आपको ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको ब्रेकआउट नहीं मिला. तो जब तक हमें ये वीकली बेसिस पे unless we get the breakout about 207.90 on the closing basis, we will not take any long position. First thing you have to understand that. लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट मिल भी जाता है, सो देन आपको सुशील जी ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो ब्रेकआउट के वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है. आपने ये स्टॉक ऐसा ढूंढा है जिसने ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे दिया. इसने ऑलरेडी आपका ये जो 2 कैंडल के अंदर ही मूव दे दिया कितना 40% का. सो नाउ दिस इज एन अनयूजुअल मूव, दिस इज नॉट अ नेचुरल मूव. तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है सुशील जी. नो मैटर, I mean, see, even if you are getting breakout, but I would say if you want to increase your risk and reward ratio, then you look for such proper risk and reward stocks which has the higher potential to go upside. Okay, which has higher probability to go upside. अब इसके अंदर 40% का मूवमेंट आपको 2 दिन में मिल गया. अब आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे और कहाँ बाय करोगे और क्या करोगे? Are you understanding? So I'll tell you my strategy. When I'm trading a weekly time frame ना, I will not put more than, I would say, 10 to 15% का stop loss. अब इसके अंदर आपका stop loss लगेगा 161 और आप बाय करोगे कहाँ पे 200 के अबव. आप देख लो आपका stop loss कितना हो गया. So this is what it is. I hope I have answered your question. Okay. Hey Sunil, yeah, again my device went crazy. I have joined again. So just like to add to that, is it okay? Just like to just give a simple hack to that. He was saying ki yaar The option thing. Yeah. So see, we see a false breakout and all this type of thing in 1 minute chart. Now see, 1 minute chart में क्या, it is bound to happen that you will get a downward moves. आपने option में position बनाया है, 1% भी नीचे जाता है 1 minute chart में, तो it impacts a lot. Okay. So देखो सिंपली क्या करना चाहिए, 1 and 5 minute कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए. एंड एज द सुनील राइटली सेड, देयर विल बी अ स्क्वीज काइंड ऑफ सेटअप. सो वहां पे यू कैन यूज सिंपली 9 EMA 21 EMA to take as a support. And also one of the rule, if you follow this, so simple rule is Nifty or Bank Nifty should be up or down, whatever you are seeing. Let's say if you want to take a long trade, just let's say you want to take a trade on Tata Motor, on the long side, just an example. You see Nifty going up, okay, broader indices, Nifty or mid cap 100, 150 going up. Second, you see Nifty auto going up. When you see this and then you see Tata Motor going up, then all forces are aligned with you, okay? Then the probability of your breakout getting failed is less. So as Sunil said, no one can tell you, whether that breakout will be successful or not, okay? But you can at least add confluencing signal to your side, which will give you a hint, okay, that the probability of that breakout is very much high. So you can use that formula key on the upside or downside, okay, whichever side you would like to take that trade. Yes, Sunil. Yeah. Correct. Makes sense. Yeah. Nitesh ji, you can go on and we can take more questions till the time we are not done and dusted with the so-called stipulated timing. Okay. Yeah. Rachit Jain sir, I have allowed you to speak. You can just turn on your mic and you can ask your question. Mr. Rachit Jain sir, I have allowed you to speak. You can just turn on your mic and you can ask your question. Hello. Hey, Yes, sir. Hi. So 2-3 questions regarding this breakout thing.
Okay. Okay. As you were saying of Balram Purchini, okay, I was going through the charts. Correct. Okay. So Correct. at Correct. 345 range, it was consolidating over a period of time. Okay. So for intraday, or you mean to say like on daily or weekly time frame? daily. Okay, daily Yeah. time frame. So Makes at sense. Okay. 345, like we can make an entry. It almost gave a breakout for that particular range, right? Correct. Uh, Correct. then after if you see those two candles, Correct. it was Correct. of huge volumes. Okay. Then for Correct. the third or the fourth day, okay, the retail Yes. participants are like, will it go up or will it came down, because it gave two big green candles. Okay. Correct. So should Yes. we exit on the third one, or should we wait for like the stop loss to hit, or like how to get? Okay. So you have taken an MTR trade, right? Main to represent trade, you mean to say, correct? Yes. Correct. Okay. So right now I'll answer your question this first, and then I'll tell you what I should have. I mean, what I would have done over here. अगर मैं ब्रेकआउट करता था, आपका MTR पहले एक्सप्लेन करते हैं. अगर आपने पोजीशन लिया यहाँ पे 314 के आसपास, and if you see रचित, you have to understand the price action very well. अगर आप देखो ये करेक्ट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ ये करेक्ट हुआ था कितना परसेंट. ये देखो, ये अगेन ये भी करेक्ट 25% के आसपास हुआ. एज आई टोल्ड यू, जब आपको करेक्शन मिलता है 20-25% का करेक्शन मिलता है, दैट इज हेल्दी करेक्शन. ओके, सो ये 25% का करेक्शन मिलने के बाद में यू गॉट अ पैटर्न कॉल्ड ट्रिपल बॉटम. You have to understand this, that this is a triple bottom pattern, wherein you got the first bottom around 25th October, you got the second bottom around 30th 26th of November, third bottom around 21st of December. So this is a triple bottom pattern. Okay, but now you took the trade as MTR, तो आपने ये यहाँ लिया होगा. ओके, 315 316 के आसपास. ओके, जो आपको no, not at 315, like around 340 330, like. ओके, 330 तो आपने यहाँ लिया, चलो ठीक है. ओके, सो ये आपको जैसे कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया. सो नाउ द मोमेंट यू हैव टेकन द ट्रेड, ओके रचित, you have to basically you have to plot an exit signal. ओके, तो जब तक अभी देखो, अभी आपने ट्रेड यहाँ लिया है, you have not even gotten a single day wherein you got to see the red candle. Unless you get the red candle and unless your exit criteria is breached, you will continue to hold on to your position. So likewise, समझो कि मैंने ट्रेड लिया होता 347 के ऊपर, जहां पे ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट था. यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता और मेरा टारगेट, ये देखो, ये जो प्राइस का डिफरेंस है 350 के, ये देखो 50 रुपए का मेरा टारगेट है, और अभी ये कहाँ चले गया, देखो मेरा टारगेट अचीव हो गया. तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा ट्रिपल बॉटम का टारगेट अचीव हो गया तो आई विल सेल द स्टॉक्स. If see this is what George Soros says. You have to understand that आप जब आप विन कर रहे हो ना, तो अपने विनर्स को काटना नहीं है. तो ये कंपनी एक ऐसा है, आपको एक दिन भी रेड कैंडल नहीं दिया, सो यू हैव टू कीप होल्डिंग ऑन टू योर पोजीशन अनलेस यू गेट द सेल सिग्नल. सो नाउ यू माइट आस्क मी कि चलो सेल सिग्नल क्या लगाऊं. यू कैन लीस्ट टू लीस्ट यू कैन पुट 9 DMA, राइट? You can put 9 DMA. Unless you get the breakdown on 9 DMA, you keep holding onto your positions. Who is telling you to exit the position? So see, when you win, you have to win big, but when you lose, you have to lose very small. And that is what George Soros focuses on when it comes to risk management. And this is what you have to do. Okay, Right, have I answered your question? Yeah, you have answered this particular example scenario. Correct. Yeah. So the second one, okay, there's a company called Aptect. Okay, there we go. Look The through company the name is APT. okay. ECHT. Okay, ECHT. Yeah, Aptech. Yeah, understood. Aptech. Go on. So Yeah. So if you see like the closing above 400, Okay. the second big candle from 375 Correct. on a daily time frame. Okay, so we can take an entry above the like 400, above the 400. Okay, Correct. so Yeah. the second candle, okay, that what's that candle like? Should we have taken the right entry on that green candle, or we should have not like taken the entry on that candle? See, okay, I'll make it very simple for you.
Okay, that is reason I told Nitesh ji, we can take as many questions as possible ताकि लोगों को समझ में आए, right? So see, we don't have to complicate the system. मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ यहाँ पे करना क्या था, ठीक है? पहली बात तो ये इसका ट्रेंड ऊपर था और यहाँ से ये इसने करेक्ट किया रहेगा 20% के आसपास. आई कैन सी द मूवमेंट, लेकिन चलो आपको चेक करके ही बताता हूँ. ये देखो एग्जैक्ट, इफ यू सी इट करेक्टेड 19%, राइट? तो ये देखो जितना आप ज्यादा चार्ट देखोगे ना, अब मैंने ये टूल नहीं भी यूज किया, यू कैन सी कि कितना करेक्शन. ये करेक्शन देने के बाद में ये 2 कैंडल के अंदर ही अपने रेजिस्टेंस के वहां पे आ गया. पहली चीज आपको रचीज ध्यान में रखना है कि 2 कैंडल के अंदर ये रेजिस्टेंस के वहां पे आ गया. इट मींस देखो इसने पैराबोलिक मूव दिया है, और अगर पैराबोलिक मूव दिया है तो ऑलरेडी ये देखो कितना भाग चुका है. ऑलरेडी ये 20% तो ये अपनी ये जो फर्स्ट रिवर्सल कैंडल था ना, मॉर्निंग स्टार टाइप, यहाँ से इसने 20% का मूव तो यहीं से दे दिया आपको. Okay. तो so in this case we should, मतलब हमको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए. No. So if you are aggressive trader, no, I will not say that you don't take. Definitely we can take. So if you are aggressive trader, we will take the entry above 410. 410 के ऊपर we will take entry on the closing basis. Okay? तो closing तो मिला ही नहीं था ये दिन पे. Okay? उसके बाद में आपका closing इसके नीचे था. closing इसका था 100, I guess 406 के वहां पे. लेकिन उसके बाद में भी आपको क्लोजिंग नहीं मिला 410 के वहां पे. आपको ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है ना, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है सर जी. तो वी विल टेक द पोजीशन ओवर हियर. तो अपने पिछले 2 दिन छूट जाते, 2 दिन रुकना ही नहीं पड़ता. यहाँ पे हम लोग पोजीशन लेंगे. अब आपको एक चीज बताता हूँ. इफ यू आर ट्रेडिंग अ पैराबोलिक मूव ब्रेकआउट, अब वहां पे एक चीज को ध्यान रखो कि देखो अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दे 333 के, सॉरी 337 के आसपास, भाई साहब स्टॉप लॉस आपका 20% का है. आपका टारगेट कहाँ लगाओगे और आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो? तो ये चीज बेसिकली वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ यू आर ट्रेडिंग पैराबोलिक मूव ब्रेकआउट एंड इफ द ब्रेकआउट इज रियल, I am telling you with my experience, you will never see this company or you will never see that ABC company coming below that breakout candle if the breakout candle is real or it is like not fake. Okay. तो अपने को क्या करना है वहां पे? we have to keep the stop loss around 399. पोजीशन यहाँ पे लिया है 400 10 के ऊपर. हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है 400 के आसपास. 1-2 रुपए का बफर रख दो एंड वहां पे वी हैव टू देखो अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा ना, एनी विच वेज ये 330 340 के आसपास आएगा. तो अपने को स्टॉप लॉस कम रखना है. वी हैव टू कीप द रिवॉर्ड हायर एंड रिस्क स्मॉल. Exactly. So as I told you, if the breakout is real, I am telling you the company will never come below the breakout candle, and that is what we have to do when you chase parabolic move breakout for the breakout trading. I hope I've answered your question. Right, exactly. Okay. Thank you so much. You answered perfectly bang on. My pleasure. No problem. Thank you so much. Thank you. So Adesh sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Yes, Adesh sir, you can turn on your mic. Yes sir. सबको गुड इवनिंग सर. एंड सबसे पहले सुनील सर, आपके चार्ट से बहुत ज्यादा क्लीन है. मेरे को बहुत ज्यादा समझ में आता है सर. और आपने जो बुक था सर प्राइस ट्रेडिंग पे, अब फंड वो वाला क्या, सॉरी नाम में फिर भूल जा रहा है. या हाउ टू मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. करेक्ट. हाँ सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा एंड आई एम अर्निंग अ लॉट. बट सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने एप्पल इंडिया खरीदा था कुछ टाइम पहले एंड आज मैंने उससे अपने 15% मतलब प्रॉफिट पे बुक कर दिया. सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मैंने जब बुक किया उसके बाद वो प्राइस भागा. तो बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा जो सेटअप टारगेट है उसको वो अचीव करने के बाद मैं निकल जाता उस स्टॉक से, फिर देखता उसके बाद वो एक्चुअल रन अप कर जाता स्टॉक. बहुत बार हुआ है एक्चुअल मेरे साथ. Okay, no problem. I'll answer your question in a very simple manner. You just tell me at what point you took the position. Around support. Mostly in support. Support कहाँ पे? Support तो ये दिख रहा है 1000 के आसपास. Yes sir. 1050 1060 पे मैं एंटर करा था. Okay, understood. ठीक है. So you played this basically MTR thing. Okay, तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और प्राइस ऊपर गया. ठीक है, आपने कहाँ पे बुक किया प्रॉफिट? सर 1260. अब मुझे एक चीज बताओ, आपने जब 1260 पे प्रॉफिट बुक किया, व्हाट इज द सेल सिग्नल यू गॉट on which you got the conviction that I should be exiting my exiting my position? You answer me this question. Resistance firstly. I thought भाई साहब अगर आपको okay understand,
if the resistance is getting broken out, if it is getting taken out, आपको और impulsive move मिलेगा या आपको exit करना चाहिए strategy से? So the very first wrong thing which you did was कि आपने यहाँ पे exit ले लिया. भाई साहब, आपको exit नहीं लेना है, आपको उल्टा I'll tell you what people do. अगर आपने पोजीशन यहाँ बनाया ना, उल्टा people will take more position and they will keep the stop loss as 1202. अब मैंने जिनको जो रचित जी को बताया था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत नीचे है और दो पैराबोलिक मूव के टाइप की वाइड रेंज कैंडल है, तो अगर ये कैंडल कभी भी फेक नहीं है, अगर रियल है, तो ये प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा 1202 के नीचे. तो व्हाट पीपल विल डू और व्हाट अ पर्सन लाइक मी विल डू इफ आई एम प्लेइंग अग्रेसिव, मैं उल्टा और ज्यादा पोजीशन लूंगा, ना कि मैं एग्जिट ले लूंगा. आप समझ रहे हो? सो you have to understand, you have to understand कि आप देखो, पहली चीज तो आप ये दिमाग में रखो कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो ना, आप एग्जिट कहाँ लेने वाले हो. आप है ना पहले एग्जिट सोच लो, टारगेट मत लगाओ. सी टारगेट तो हमें पता है कि ये पैटर्न ब्रेकआउट मिला है तो इसका जो बेस है नेकलाइन टू बॉटम ऑफ द बेस ऑफ द पैटर्न, ये टारगेट होगा. ये टारगेट आ रहा है 1750 के आसपास, ये पूरे पैटर्न के ऊपर. लेकिन आप टारगेट के पीछे मत जाओ, आप एग्जिट क्यों कर रहे हो? सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कटिंग योर विनर्स एंड booking the losses on the losers. So that is the wrong thing you are doing, right? So you have to write the winners. आपको अब तक एक सेल सिग्नल नहीं मिला है. Okay, how could you sell the position? You tell me first this thing. Are you understanding? Yes sir. हाँ. तो वो चीज है. तो कभी भी ध्यान रखो कि आप पहले एक चीज डिसाइड करो कि आप 9 DMA को यूज कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरा सीरीज S&R यूज कर रहे हो आप इसके लिए एग्जिट पोजीशन के लिए. तो जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता सर जी, आपको एग्जिट क्यों लेना है? फर्स्ट टेल मी दैट. ओके, एंड सी Adesh, understand this is the big difference between an amateur trader and a professional trader. See, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि we are very big people this that. What I'm trying to tell you is कि आपको बेसिक नुआंसेस समझने हैं प्राइस एक्शन के. So एक्चुअली में सर बहुत बार हो जाता है लाइक फोमो, लाइक मैंने इतना परसेंट बुक कर लिया, मेरे को निकल जाना चाहिए, मेरे को अदर पे ढूंसना चाहिए. बट हाँ, यू आर राइट, टोटली राइट सर. अगर आपका यहाँ पे है ना पोजीशन अगर उल्टा चले जाता, आप है ना अगर नीचे चले जाता ना, ये स्टॉप लॉस आपका ये सपोर्ट ब्रेकडाउन मिल जाता, आप सोचते यार ये तो एक दूसरा सपोर्ट दिख रहा, मुझे 700 750 ये थोड़ा रखता हूँ, यहाँ से बाउंस मारेगा. तो आप क्या करते पता है, आप अभी कभी स्टॉप लॉस को ये अपने पोजीशन को कट नहीं करते, आप उल्टा और एवरेज कर डालते. एंड दैट इज द आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन प्रो ट्रेडर एंड एन अमेच्योर ट्रेडर. यू हैव टू राइट द विनर्स and cut the losers. You have to understand this. और पहले ये चीज दिमाग में बिठा लो कि मेरा एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है. जब तक ये एग्जिट स्ट्रेटेजी मिलता नहीं है, मैं एग्जिट नहीं करने वाला. एंड देखो, जैसे आपने बोला फोमो, सी ये चीज मुझे लगी है शायद आप पैटर्न तो आप 6 महीने में भी सीख लोगे सारे पैटर्न, लेकिन जो हमने जो 6-7 साल दिया है उसके अंदर हम लोगों ने डिसिप्लिन सीखा है, RM सीखा है, पोजीशन साइजिंग सीखा है. बाकी पैटर्न तो मैं आपको 2 दिन में सिखा सकता हूँ. तो ये चीज थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन प्रैक्टिस ऑन दिस. लेकिन आई एम टेलिंग यू, if you practice this, I am telling you, you will see changes within you. If you can basically see what I've said, or if you can implement on the same. Thank you sir. So one more chart that is like Lakshmi Organics. ये लो, आपका लक्ष्मी लगाते हैं. ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, राइट? मैंने पोजीशन बना के रखा है सर उस पे 440 पे, 440 के रेट्स पे. ओके, देयर यू गो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स. Okay, so Lakshmi Organic was a very nice MTR play. आपने कहाँ बनाया पोजीशन, वो मुझे बताओ. 440 के रेट पे सर. ओके, 440 के रेट पे. ओके, तो यही बनाया है, ठीक है. तो इसके अंदर आपने एक चीज गलत की. अगर आप नेक्स्ट टाइम याद रखो, अगर आप ऐसा पोजीशन बना रहे हो, आज मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है रिवर्सल पैटर्न के साथ में. तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था डबल बॉटम टाइप. तो जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिला था आपको 450 के ऊपर, तब तक आपको पोजीशन ही नहीं लेनी थी यहाँ पे. तो और अगर आपको पोजीशन लेनी थी तो आपको पोजीशन लेनी थी एकदम MTR पे 400 के आसपास. आपने पोजीशन गलत जगह ली. देखो, ये आपको पहले चीज सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या रूल्स को फॉलो कर रहे हो. जब तक आप कोई प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आपने एक एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, जब तक लॉसेस को बुक करना नहीं सीखोगे एट द राइट टाइम, आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी अ वेरी रफ पेज फॉर यू. द जर्नी इज गोइंग टू बी रफ पेज. ओके, सो अभी यहाँ पे आपको इसके अबाव पोजीशन लेना था, यहाँ पे नहीं तो आपको एकदम MTR पे लेना था, एकदम रिवर्सल के वहाँ पे जहाँ पे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है. मैं आपको बताता हूँ आपका स्टॉप लॉस भी क्या होता. अगर आप पोजीशन लेते 416 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस बनता, आई एम टेलिंग यू, ये कैंडल का लो, अराउंड 8% का स्टॉप लॉस.
आप 8% का स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर ये आपका डबल बॉटम से ब्रेकआउट मिलता है, यू विल सी मोर अपसाइड. व्हाट एल्स डू यू नीड? You have to keep 8% stop loss and keep holding on to your position unless you get the sell signal. I hope you understood. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome. My pleasure. Sir, can I address few more questions? Allow few more traders. Yeah, definitely. But we can take 2 to 3 questions more. Okay, I guess we are done with the timing and everything. Take it, no worries. As you No, said, just as per your comfort, sir. Okay, and I am not no. forcing anything. As per your comfort. See, we want to help as many people as we can. Okay, Sir, to and be honest and to be frank, if you allow now, we can do part 2 of this session also. One more session also. Okay. Definitely, that about that we'll definitely think over. And right Okay. now, definitely we can take 2 to 3 more questions. Okay, for sure. Yeah. Krishnan sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Krishnan sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Okay, I think he's not there. Okay. Nirav bhai, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can speak, sir. The big man in the house has come. Hello, Nirav ji, how are you? I'm fine. Sunil, how are you? And I am all right. आपकी कमी खल रही थी. अरे बस ना यार. First of all, Nitesh, very good initiative. Congratulations, and Sunil and Devraj, really a very very nice session. And I must say that the down to earth approach and the basically the attitude in explaining the charts and individual charts and individual query and how you explain the process also. I think Sunil बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था आपका. So thank you sir. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लोगों का. मैं सिर्फ खाली TCS पे पूछना चाहता हूँ बस. और Definitely, yes. Okay, so you're saying that we can talk about TCS, right? Yes. See, ultimately, no doubt, it's a long-term portfolio stock. ये ट्रेडिंग तो है नहीं भाई कि इसको आज कल बेच. But yes. as a new trader or as a new person or a new technical learning person, suggest whether we should apply our technical knowledge on a blue chip stocks or whether we should apply our knowledge on a mid cap stocks जो generally बहुत ही fast ride देते हैं. तो क्या मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. I may be very silly in asking this. No problem, definitely. टेक्निकल एनालिसिस का जो करेक्ट कंसेप्ट है वो ब्लू चिप पे बैठेगा सही या मिड कैप पे बैठेगा सही? Okay. So basically, yeah. So now I'll answer your question, Nirav bhai. So yeah. So there is no right or wrong answer for the thing which you said कि blue chip पे चलेगा या mid cap पे चलेगा. See, the stock which has the tendency to follow the technical analysis and so-called price action, that company will have price action working on it. That is the best question which I could give. Now coming back to the view on TCS. Okay, देखो नीरव भाई, अगर आप देखो ये कंपनी को, this company corrected I guess more than 25% from all time high, I guess 15%. और यहाँ से इसने, अब ये देखो जिसको इसके अंदर पोजीशन लेना था ना, देखो थोड़ी देर पहले मैं वही कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि जिसको इसके अंदर पोजीशन लेना था, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था, यहाँ पे वी कुड हैव टेकन पोजीशन ले सकते थे 3579 के वहां पे. ओके, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे वी कुड हैव टेकन पोजीशन. अभी अगर कोई पोजीशन यहाँ पे लेगा नीरव भाई, ये लास्ट के इफ आई कुड कैलकुलेट राइटली 3 9 12 लास्ट के 5-10 दिन में ये 10% भाग गया है. अब जो स्टॉक लास्ट के 10 दिन में 10% भाग गया है, तो इसके अंदर एक पैराबोलिक मूव आया था. अगर आपको ये स्टॉक लेना था, आपको लेना चाहिए था ये 3670 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्लैग टाइप फॉर्मेशन बन रहा था, मिनी फ्लैग टाइप फॉर्मेशन. लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ, लास्ट के 4 दिन में तगड़ा मूव आया है. अब ऐसे अगर स्टॉक में लूंगा ना नीरव भाई, इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा जो टारगेट है मैं अच्छे से नहीं लगा पाऊंगा. क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जहां पे भी पैराबोलिक मूव मिलेगा ना, वहां पे ये कंपनी ऑलरेडी तगड़ा भाग चुका है यहाँ से. तो वी हैव टू लुक फॉर अ स्टॉक. अगर आपको पता रहेगा, कल मैंने ये कौन सा स्टॉक दिया था, आई गेस मैंने
ये है ना अपना, आई गेस मैंने ये I forgot the company name. Okay, हाँ ग्रिंडवेल नॉटन। नो उसके साथ में मैंने नहीं कल जो मैंने ट्वीट डाला था उसके अंदर मैंने 3 चीजें दी थी। एक तो रिवर्सल कैंडिडेट दिए थे, एक मैंने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट सून दिया था। तो उसके अंदर एक वो आईटी कंपनी थी। चलो मैं आपको कोफोर्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप कोफोर्स लोगे, ओके, कोफोर्स के अंदर आप देखोगे नीरव भाई, तो इसके अंदर मूव आया है, लेकिन एक प्रॉपर ऐसा फॉर्मेशन है। अभी एक सेकंड में चार्ट देख लेता हूँ। तो अभी देखो कोफोर्स के अंदर ब्रेकआउट मिला हमें, कहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला 6015 के ऊपर ब्रेकआउट मिला। तो जो कंपनी एकदम अपना जो प्रॉपर हर्डल है और जो आई वुड से स्पीड ब्रेकर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द रेजिस्टेंस इन योर टेक्निकल लैंग्वेज, जो कंपनी रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट दिया ना, वो कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, ना कि जो कंपनी अब तक ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, जब भी कोई भी कंपनी एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे फाइट चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स का। तो जब देखो, लोगों का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है एटीएच और 52 वीक हाई। तो कोफोर्स के अंदर एटीएच हुआ 6025 के आसपास। तो जो कंपनी एटीएच को ब्रेक कर रही है ना, और अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर रही है ना, वो कंपनी का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का। अब क्यों? अब वो भी आपको बताता हूँ। बिकॉज ये कंपनी का जो फाइट चल रहा था बुल्स एंड बेयर्स का, वो फाइट खत्म हो गया। द मोमेंट, सी what do you mean? So when you say you are getting breakout on the resistance level, it means that the fight got over and the bulls have won. If the bulls have won, the story should continue towards the upside only. And in the case of TCS, so far the 52 week high or ATH is not taken out. तो we never know कि वो जो उसका जो proper resistance है, the strong resistance, वहां पे जाके शायद consolidate करे, we never know. So that way we have to see. So we have to go with a strong counter. So my final verdict will be that we can see mid-cap IT companies which are setting up very nicely for the breakout play. We can tab on those kind of companies instead of taking a bet on the company which has not even crossed I would say the proper hurdle. I guess I've answered your question. Okay, just a minute, sir. Nirav sir, I think got disconnected. Yes, Nirav sir, now you can turn on your mic, sir. And, for the answer and a lovely explanation on this point. Thank you very much, Sunil. Yes, thank you, Nirav bhai, joining the session. Thank you. बाय द वे, नीरव भाई का ही हाथ है ब्रेकआउट सून के पीछे। यही मुझे बोला करते थे, सुनील ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बना जिसके अंदर वी कुड प्रीएम्प्ट, वी कैन डू दिस एंड दैट। सो या नीरव भाई, हाँ, करेक्ट, थैंक यू sir. So okay, sir, one more thing, time is almost 10 p.m, almost 1.5 hour is done. So if I have so not now we can, I taken, guess, call it the day. yes sir, now if I have not taken any other traders question, just it's because of time constraint, I might not take any further questions. So once again, Sunil sir, thank you so much for being part of this Twitter space and accepting the invitation. And almost 1200 plus active traders have been part of this session, and it was a clear session. And once again, thank you so much, Sunil sir. It was my pleasure. And being there. Also your friend who was part of the session. Yeah. My co-founder Devraj Vasne. Yes, sir. Wow. Thank you so much, Devraj sir, for sharing his knowledge. I think he is in the session or not, I have no idea about it. So still, great session. Many things to be learned. Definitely. It was my pleasure to being there and talking with all of you. And I hope I might have added value to all of you. Okay. And this was all from my side, and we can call it the day. And definitely, if we can do something around with the same, then we will also keep more live spaces like this, and we will continue to learn from each other. For sure, sir. It will be a great pleasure for me to hosting this session. Thank you so much. Thank you. Yes, everyone, just stay connected with us. Follow us and stay connected with us to get more of this learning session in upcoming days. Once again, thank you so much, everyone, and thank you so much, Chartmojo team, to be part of this session and sharing a valuable knowledge.